Hello, dear students. Welcome to the revision class of your chapter number 2, periodic classification of elements. Okay, I hope students, all of you are watching your this revision videos regularly. Okay, because it consists of the different types of questions, and you get to know this things very important, that what type of questions will come for the exam. Okay, already you have given your prelims test, and you have given certain kind of test. From that you already know about this, but these revision videos are very important, students. So make a note of it. Okay, everyone has to watch every day's tutorial videos, every day's this kind of revision videos. Okay, yes, so today we are going to do the revision of chapter 2, periodic classification of elements, and here we are going to take the revision of objective types of questions. Okay, yesterday in the last video what we have seen the objective types of questions of your chapter 1, that is gravitation. Okay, students, yes, so let's move to our today's topics and today's topic questions. So here the first question says choose the correct alternative. Okay, you already know that this is consist of 1 marks each. Okay, one every question having 1 marks. Okay, so now let's take some questions from this chapter. One thing is very important from this chapter, as the number says, chapter name says periodic classification of elements. So what is the most important from this chapter? That is your periodic table. Okay, periodic table consists of so many questions, so I hope be thorough with it. You all are thorough with it, the periodic table. Okay, till 30th of elements you have to study. Okay, and you have to remember the names also. Okay, students, this is very important. Modern periodic table is very important from this chapter. Most of the questions is depend upon this modern periodic table. Okay, so now here you can see the first question, that is the metalloids have properties of dash. Let's see the options. First is metals, non-metals, both metals and non-metals, neither metals or non-metals. Okay, this is your prelims ka question. Okay, those who got it right, very good students. Okay, yes, so what is the answer? Answer option C, both metals and non-metals. Okay, remember students, metalloids having properties of both metals also and non-metals also. ठीक है? Okay, now the second question, halogens belongs to the group dash in the modern periodic table. Okay, so what is the answer? It is group 15, it is group 16, group 17 or group 18. What is the answer? Quickly think about it in your mind. Okay, now yes, you all are right. Answer is C, 17. Halogens are belong to what group? 17. Okay, yes, what are halogens? Fluorine, chlorine, bromine, iodine. These are halogens and they are belongs to group 17. Okay, now the third question is the number of electrons in the outermost shell of alkali metals is dash. Okay, option A is 1, then 2, 3 and 4. तो अल्कली मेटल्स है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? क्विकली यू हैव टू रिमेंबर द पॉइंट, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर माइंड. ऐसे होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आपने रीड किया तो उसके बाद ऑप्शन मिलने के बाद डायरेक्टली आपके माइंड में जो है वो करेक्ट ऑप्शन आना ही चाहिए. ठीक है, इतना आपका सब क्लियर होना चाहिए. सो हियर द आंसर इज 1. अल्कली मेटल्स में हमेशा आउटरमोस्ट शेल में क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, नाउ द सेकेंड इज अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव वैलेंसी 2. This means that their position in the modern periodic table is in dash. वैलेंसी 2 होगा तो उसका पोजीशन भी क्या होगा? What is the answer? Group 2. Yes, group 2. Now fifth is, in which block of the modern periodic table are the non-metal found? S block,
पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। नॉन मेटल कहाँ पे फॉर्म होते हैं? ओके, सबसे पहले ध्यान में रखना है एस ब्लॉक कौन से साइड पे है, डी ब्लॉक कहाँ पर है। पी ब्लॉक में क्या होते हैं? जिगजैग लाइन होती है, रिमेंबर दैट। और उसमें क्या होता है? जिगजैग लाइन के कौन से साइड पे मेटल्स होते हैं, कौन से साइड पे नॉन मेटल होते हैं, दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो नॉन मेटल कहाँ पे फाउंड होते हैं? आंसर इज पी ब्लॉक। ठीक है, ओके। सो this types of like this types of choose the alternative types of question will come from this chapter. Now the second is write the names from the description, okay, or else it will come from one sentence or one point also, okay, one sentence. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? Here you can see the period with electrons in K in the shells K, L and M. ओके, तो 3 शेल है यहाँ पर, के शेल, एल शेल एंड एम शेल. सो द पीरियड विथ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स के, एल एंड एम. ऐसा कौन सा पीरियड है कि जिसमें 3 शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? तो कौन सा होगा? पीरियड नंबर 3. ओके, रिमेंबर व्हाट इज़ कॉल्ड पीरियड, व्हाट इज़ कॉल्ड ग्रुप्स. ओके, तो वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं उसको ग्रुप्स बोलते हैं, एंड वी हैव 18 ग्रुप्स. एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स. एंड हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर? 7 पीरियड्स. ठीक है, ओके, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, रिमेंबर दैट एंड फिक्स्ड दैट इन योर माइंड फॉर द लाइफ टाइम. ओके, नाउ द सेकेंड इज द ग्रुप विथ वैलेंसी 0. कौन सा ग्रुप है जिसकी वैलेंसी 0 होती है? व्हाट इज द आंसर स्टूडेंट्स? ग्रुप 18. ओके, ग्रुप 18 जो है सबसे लास्ट का जो ग्रुप है, जहाँ पे क्या होते हैं, कौन होते हैं? नोबल गैसेस होते हैं, हीलियम, नियॉन, अर्गॉन. ओके, सो दे हैविंग वैलेंसी 0, सो दैट इज कॉल्ड एज 0 ग्रुप भी बोलते हैं उसको. ठीक है, सो ग्रुप 18 इज द आंसर. नाउ द थर्ड इज द फैमिली ऑफ नॉन मेटल्स हैविंग वैलेंसी 1. नॉन मेटल्स है जिसकी वैलेंसी 1 है, they are called as halogen group. Okay, halogens. Fourth, the family of metals having valency 1. कौन है? अल्कली मेटल्स. ठीक है, अल्कली मेटल्स में वैलेंसी 1 होती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में वैलेंसी 2 होती है. ठीक है, ओके. नाउ द फैमिली ऑफ मेटल्स हैविंग वैलेंसी 2. अभी यहाँ पे वैलेंसी 2 कौन है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ठीक है, ओके. नाउ 6, द एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज. ऐसा कौन सा एटम है जिसकी साइज जो है वो सबसे स्मॉल है? सो व्हाट इज द आंसर? हाइड्रोजन, H. ओके, नाउ द 7 इज द एटम हैविंग स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास. कौन सा, किसका एटॉमिक मास सबसे स्मॉलेस्ट होता है? इसका भी आंसर क्या है? हाइड्रोजन, H. सिंबल इज H. नाउ द 8 इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. Who is the most electronegative atom? Fluorine. Okay, fluorine is the most electronegative atom and the noble gas with the smallest atomic radius. ये एक नोबल गैस है जिसका एटॉमिक रेडियस स्मॉलेस्ट है. ऐसा कौन सा नोबल गैस है? दैट इज हीलियम. हीलियम का एटॉमिक रेडियस जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है. ओके, हीलियम, नियॉन, अर्गॉन, these are called as what? They are called as noble gases. but इन सब में हीलियम का एटॉमिक रेडियस स्मॉलेस्ट है. ओके, एंड द 10th नंबर इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल. ये जो है सबसे रिएक्टिव है एंड वो एक नॉन मेटल है. सो द आंसर इज फ्लोरीन, F. ओके, yes, so this type of questions will come for 1 mark. Now true or false? In the long form of periodic table, Group 3 to 12 constitute the P block. क्या है आंसर इसका? ग्रुप 3 to 12 कौन सा ग्रुप है? ये P block है? No, this is false. It consists of what? Which block? D block. Okay. Now the second, the atomic radius increases while going from left to right within a period. एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ होता है क्या? जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में. ओके, सबसे पहले ध्यान में रखना है पीरियड मतलब कैसा. ओके, हॉरिजॉन्टल रोज.
ओके, दैट इज कॉल्ड एज पीरियड एंड वर्टिकल कॉलम्स आर ग्रुप्स. तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट में जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इट विल गोज ऑन डिक्रीजेस. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. थर्ड, द वैलेंसी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इज 2. ग्रुप 16 एलिमेंट कौन है? ग्रुप 16 एलिमेंट के वैलेंसी 2 है क्या? येस, दिस इज ट्रू. Fourth, smaller the electropositivity or electronegativity of the element, higher the reactivity. What you think, students? Is this a right answer or wrong answer? This is false. Larger the electropositivity or electronegativity of the element, higher is the reactivity. Okay, read the sentence very carefully because sometimes a question will come like very confusing and like that, but if you're thorough with it then don't worry, you just have to write it. Okay, yes. So now question number 4, find odd man out. lithium, beryllium, boron, chlorine. क्या है? chlorine is the odd man out over here because chlorine is placed in period 3 while others are in period 2 in the modern periodic table. क्लोरीन ही एक है जो क्या होता है, कौन से पीरियड में होता है? पीरियड 3. बाकी जो है लिथियम, बेरिलियम, ओके, बोरॉन, ये पीरियड 2 एलिमेंट्स है. ओके, दैट्स वाई इट इज़ ऑड मैन आउट. 2, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन, अर्गॉन. नाउ हियर यू कैन सी हीलियम, नियॉन, अर्गॉन, दे आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस, बट फ्लोरीन क्या है? ऑड मैन आउट. ओके. थर्ड, FeCO, Ni, Al. ओके, इसमें से क्या है ऑड मैन आउट? Al, बिकॉज Al, ओके, दैट इज एल्यूमिनियम, इज अ P ब्लॉक एलिमेंट वाइल अदर्स आर D ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है. ओके, नाउ कंप्लीट द एनालॉजी. लिथियम सेकेंड पीरियड में है तो एल्यूमिनियम कौन से पीरियड में है? इट इज बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 3, दैट इज थर्ड पीरियड. Alkali metals belongs to S block, then transition elements belongs to which block? D block. Yes. Now the third is sulfur. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हमें, जैसे कि कैल्शियम का दिया है 2882. तो सल्फ़र का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सल्फ़र का सबसे पहले देखना है व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर 16. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2,8,6. Okay, yes. Valency of potassium atom is 1 and valency of argon atom is what? पोटेशियम का वैलेंसी कितना है? 1. तो अर्गॉन का कितना होगा? दैट इज 0 बिकॉज अर्गॉन इज बिलोंग्स टू ग्रुप 18 एलिमेंट. ठीक है. ओके, ग्रुप 18 से बिलोंग होता है अर्गॉन, दैट्स वाई इट्स वैलेंसी इज 0. नाउ मैच द फॉलोइंग. ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है. यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ट्रायड किसने दिया था, ऑक्टेव किसका था, एटॉमिक नंबर मतलब क्या, ओके, पीरियड इज़ व्हाट. सो नाउ आई एम गिविंग यू 1 minute, जस्ट क्विकली रिमेंबर एवरीथिंग इन योर माइंड. और आप अगर आपके पास नोटबुक होगा तो आप अभी इसी टाइम पे नोटबुक में अपने आंसर्स लिखो. आई एम गिविंग यू 1 minute फॉर दिस. क्विकली फिनिश. Remember, who gives Newton, who gives octave, who give triad. ओके, ट्रायड में क्या होता है? Yes, students, I hope you all are prepared with your answers. So now it's time to check your answer. Okay, so here आंसर फर्स्ट, ट्रायड का जो है, ट्रायड मीन्स व्हाट, क्या करते हैं हम ट्रायड में? एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एटॉमिक मास एंड इट इज़ गिवन बाय होम? इट इज़ गिवन बाय डोबेराइनर. ओके, तो डोबेराइनर का ट्रायड है और ये क्या है? ऑप्शन CN5. नाउ द सेकेंड इज ऑक्टेव. ऑक्टेव में क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ 8 एलिमेंट सिमिलर टू द फर्स्ट. And Newland gave this law of octave.
ओके, सो ऑक्टेव का मैच द फॉलोइंग है D and 3. नाउ द थर्ड, एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. येस, एंड it is given by Moseley. So here the answer is D and 6. Answer is E and 6. Okay, थर्ड का आंसर क्या है? E and 6. Now what is period? पीरियड मतलब क्या होता है यहाँ पे? सिक्वेंशियल चार्ज इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. येस, एंड यहाँ पे व्हाट इज आंसर योर? दैट इज मेंडेलीव ने, मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल है. येस, सो हियर द आंसर इज F and 1. नाउ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का क्या आंसर है? B. कॉन्सेंट्रेटेड मास एंड पॉजिटिव चार्ज. येस, एंड रुदरफोर्ड ने इंट्रोड्यूस्ड किया था उसको. So that's why here the fourth वाला option. And here 6 is electron. Electron क्या है? Lightest and negatively charged particles in all the atom. Okay, and here and उसका लास्ट में क्या आएगा? इसमें से क्या मैच द फॉलोइंग है? दैट इज थॉमसन. ओके, यस, ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ आई होप यू आर डन विद दिस एवरीथिंग. Okay, so this is one kind of match the following, and another is alkali metal, alkaline earth metal, halogen family, inert gas. alkali metal क्या कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? ओके, yes, so alkali metals belongs to group 1, alkaline earth metal belongs to your group 2, halogen family group 17, and inert gases group 18. okay, inert gases helium, neon, argon. ठीक है, these are inert gases. okay, so this is about your match the following. Go through each and every questions students and write it down in your notebook. Thank you.